Let's better now talk about the classification of seizures, the main problem in the epilepsy. By the way, what are seizures by definition? They are sudden, excessive and synchronous firing of neurons in the particular portion of the brain, leading to different presentation depending upon the site of the brain involved. Two main types of seizures are the focal seizures and the generalized seizures. Focal seizures are said to be the focal because they involve only a portion of the one hemisphere of the brain. Even they don't involve the entire hemisphere. If these are two hemispheres, one here, one right over there, if any particular portion like this, small foci is involved, then in that case, the seizure is going to be this focal seizure. Only a portion of the one hemisphere is involved. And the symptoms obviously depend upon the site and extent to which electrical activity spreads to other neurons in the brain. सिम्टम्स किस पे डिपेंड करते हैं कि साइट क्या है इस फोकस की, फ्रंटल लोब में, टेम्पोरल में, पैराइटल में, ऑक्सीपिटल लोब में है, वेयर एग्जैक्टली द फोकस इज प्रेजेंट, एंड डिपेंड करता है कि जो न्यूरोनल फायरिंग है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में और फिर यहाँ से इस तरफ नॉर्मल की तरफ कितनी एक क्या एक्सटेंट है उसके स्प्रेड होने का, तो उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है. In case of focal seizures, what is the presentation in general? Loss of consciousness or awareness. Simple. You understand? What is the main thing in the focal seizures? What is the main presentation in the focal seizures? Loss of consciousness or awareness. Convulsions नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है. Convulsions किसको कहते हैं? Rapid contractions, relaxations of muscle, muscle का अकड़ जाना, फिर रिलीज हो जाना, फिर अकड़ जाना, रिलीज हो जाना. But that is not seen in the focal seizures. The main thing in the focal seizures is बेहोश हो जाना, consciousness, awareness का loss हो जाना. ठीक है. But don't forget, the focal seizures can progress and they can become bilateral tonic-clonic seizures. The bilateral tonic-clonic seizures are one of the types of the generalized seizure. So make sure if you're suffering from the focal seizures of epilepsy, you must treat it by the time. Otherwise, they are going to progress to some severe variety of the seizures, that is the bilateral TC seizures, that is the tonic-clonic seizures. Now let's talk about the generalized seizures. But before you see here, focal seizures की भी दो types हैं, simple partial and complex partial. You just keep it in your mind, and we'll better talk about this in the neurology, the medicine part. The generalized seizures, they begin locally and progress throughout the both cerebral hemispheres. So it is like they involve initially the small focus of the brain, and then this small focus of brain progresses to involve all the areas of one hemisphere and later the second hemisphere. So how do they begin? They begin locally. As I told you, one particular portion of the brain is involved locally, and then it spreads to involve all the areas of one hemisphere, and later the second hemisphere is also involved. Okay. It may be convulsive or non-convulsive. Convulsions हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती. I'll talk about all the types of generalized seizures, in which you will see some show the convulsions, some do not show convulsions. But the main thing in the generalized seizure is immediate loss of the action. Okay. I mean to say immediate loss of the consciousness. You understand the difference between the focal seizures and the generalized seizures? Focal seizures, small foci of the brain is involved. And the generalized seizures, it begins locally, spreads one hemisphere and then entire hemispheres, both hemispheres. And the problem in the focal seizure, the presentation was the loss of the consciousness or awareness. The same thing is in the generalized seizure, that is the immediate loss of the what? Consciousness, right? And may be convulsive, may not be convulsive. But in case of focal seizures, there was no convulsions. Let's now talk about the types of the generalized seizures. One is the tonic-clonic type. What type, beta? Tonic-clonic type. In this type, what happens? There is loss of consciousness, number one thing, followed by tonic and then clonic phase.
What happens in the tonic phase? There is the continuous contraction of the muscles of the limbs and all, right? And then after the tonic phase of the contraction comes the clonic phase. What happens in the clonic phase? There is the rapid contraction and relaxation, rapid contraction, relaxation, contraction and rapid relaxation of the muscles, right? Okay, so this is the main thing in the tonic clonic variety of the generalized seizures. आपने देखा इसके अंदर कॉन्शियसनेस भी जा रही है और कन्वर्जेंस भी है. टॉनिक फेस, क्लॉनिक फेस, टॉनिक फेस शोइंग द कंट्रैक्शन, क्लॉनिक फेस शोइंग द रैपिड कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. और जब ये एपिसोड चला जाता है टॉनिक क्लॉनिक सीजर का, तो पेशेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, एग्जॉस्शन होती है, क्योंकि ड्यूरिंग द अटैक द ग्लूकोज इज डिप्लीटेड एंड ऑल एनर्जी स्टोर्स आर यूटिलाइज्ड और ऑल आर लॉस्ट. आई एक्चुअली हैव सीन द पेशेंट of tonic clonic generalized seizures. I have seen patients with the tonic clonic generalized seizure. They lost their consciousness. Then they have kind of tonic phase, clonic phase. After this episode is done, I have seen the patient जो कि बोलते हैं कि उनके जिस्म में काफ़ी थकावट सी हो गई है, वो काफ़ी confused रहते हैं. I have seen the patient, they suffer from this episode and they later sleep. They get sleep for 4 to 5 hours. And when they wake up, they are like, okay, they feel better. Why they, kind of sleep after this episode? क्योंकि ये एपिसोड उनको काफ़ी थका देता है. इतनी मसल की कंट्रैक्शन होगी तो ज़ाहिर ग्लूकोज और एनर्जी भी कंज्यूम हो गई होगी सारी. So they become very much tired. So they get sleep. And once they, get sleep and wake up 4 to 5 hours later, they feel little better. But you have to treat that seizure by time. Otherwise, few days later, दोबारा एपिसोड आएगा. Another type of the generalized seizure is the absence seizure. Absence seizure में और tonic clonic seizure में एक फ़र्क है. In case of tonic clonic seizure, there was the loss of the consciousness, okay, but here the loss of consciousness is very much brief, abrupt or self-limiting, or sometimes you may not see the loss of consciousness. Okay, if there is loss of consciousness, it will be for very short period of time. Okay, self-limiting and abrupt and very brief. So you see the difference in the tonic clonic and the absence variety. In tonic clonic variety, the loss of consciousness was little handsome for some time, but in absence variety, the loss of consciousness is for very short period of time. The absence type of generalized seizures can be seen in what age group? 3 to 5 years of the age, छोटे बच्चों में, and last until the puberty या फिर उससे भी आगे तक ये seizures देखने को मिल सकते हैं. कॉन्शियसनेस का लॉस होना इसमें बड़ा प्रॉब्लम नहीं है एब्सेंस सीजर्स में. व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द एब्सेंस सीजर्स? दैट एक्चुअली टेल्स यू, ओके कम ऑन, दिस इज द एब्सेंस सीजर. व्हाट इज द मेन थिंग विथ विच पेशेंट आपके साथ आए और आप बोले हाँ ये सीजर तो है, लेकिन इसमें एक ज़बरदस्त चीज़ होती है जिसको आप देख के बता सकते हैं अच्छा ये तो एब्सेंस सीजर है. इसमें पेशेंट की जो क्वालिटी होती है वो इस तरीके से होती है कि पेशेंट आपको स्टेयर करता है, घूरता है, ताड़ता है, और यू विल सी देर विल बी रैपिड आई ब्लिंकिंग 3 से 5 सेकंड के लिए. बहुत काफ़ी रैपिडली आईज ब्लिंक करती हैं, उसकी आईलिड्स ब्लिंक करती हैं. ठीक है बेटा, इस तरीके से. सो देर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द टॉनिक क्लॉनिक एंड एब्सेंस. आई डोंट थिंक आई हैव टू फर्दर एलाबोरेट इट. EEG electroencephalogram findings, I don't think I have to tell you this, but still EEG पे आपको spikes मिलेंगी 3 per second and the wave discharge will be seen. We'll better study this in neurology. Number 3 type of the generalized seizures is the myoclonic type. Myoclonic generalized seizure. It can occur in any age, but usually begin around the puberty or early adulthood, the age of enjoyment. People love to have some good time. Okay, but myoclonic seizures can be not really good in this age. Myoclonic seizures, what happens in this? Short episodes of muscle contraction for several minutes. It generally occurs after awakening and exhibit as the brief jerk of the limbs. Can you see the difference बेटा? यहाँ पे कॉन्शियसनेस ज़्यादा थी, यहाँ पे कॉन्शियसनेस कम, यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ज़्यादा हो रही थी, यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत कम थी. यहाँ पे कॉन्वल्जेंस देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे कॉन्वल्जेंस देखने को नहीं मिल रहे. मायोक्लॉनिक के अंदर यू सी देर आर कन्वल्जेंस, शॉर्ट एपिसोड्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन, खास करके नींद से उठने के बाद, इन द फॉर्म ऑफ ब्रीफ जर्क्स ऑफ द लिम्स.
समझ रहे बेटा, इस तरीके से। These are the some important types of the generalized seizures. Two more are there. ये वही हैं लेकिन इनको थोड़ा सा अलग से बताया हुआ है। जैसे कि clonic type of generalized seizure, what happens in this is the short episodes of the muscle contraction. It closely resembles the myoclonic seizure. Myoclonic seizure में भी क्या था, short episode of muscle contraction. यहाँ पे भी क्या है, short episode of muscle contraction. But the difference is of consciousness. Consciousness is more impaired in the clonic variety compared to myoclonic variety. अब देखें यहाँ पे consciousness तो लॉस हो ही नहीं रही थी, clonic variety में consciousness लॉस होती है ज़्यादा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। मायोक्लॉनिक में भी शॉर्ट पीरियड के लिए मसल कंट्रैक्शंस, यहाँ पे भी शॉर्ट पीरियड के लिए मसल कंट्रैक्शन, लेकिन फ़र्क दोनों में कॉन्शियसनेस का है। ठीक है बेटा। उसके बाद आती है टॉनिक टाइप, सिंपल टॉनिक। एक तो हमने ऊपर टॉनिक क्लॉनिक वैरायटी पढ़ी ना, जिसमें दोनों चीज़ें हो रही थी। अब क्लॉनिक टाइप अलग और टॉनिक टाइप अलग, ये भी हो सकता है। टॉनिक टाइप इंक्रीज्ड टोन इन एक्सटेंसर मसल्स, दे स्टे फॉर लेस देन 60 seconds, राइट। muscle tone is very much increased. And then comes the atonic type lastly, जिसको हम ड्रॉप अटैक्स भी कहते हैं, कैरेक्टराइज बाय द सडन लॉस ऑफ द मसल टोन। ठीक है, ये टॉनिक के बाद होती है। टॉनिक में मसल टोन इज वेरी मच इंक्रीज्ड एंड सडनली द पेशेंट लॉसेस द मसल टोन, so that is said to be the atonic variety. So I hope beta I have delivered it in such a very good way, but if you still have any question you can ask me. So we are clear with the classification of seizures. We'll now be talking about the beta all about the anti-seizure medications.